कांग्रेस के सीनियर लीडर वीके हरिप्रसाद ने राम मंदिर के इफ्तिताह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये एक सियासी तकरीब है जिसकी क़ियादत नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसी शख्सियात कर रहे हैं, न कि मजहबी रहनुमा। उन्होंने कर्नाटक में गोधरा जैसी मुमकिन सूरत हाल का अंदेशा जाहिर किया और अयोध्या के ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने पर जोर दिया। ಒಂದು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಉನ್ಮಾದ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರಗಳನ್ನು ಸಹ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಸೇವಕರ ದಹನ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೋಧ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರವಾದ ಘಟನೆ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಧ್ರಾನ कर्नाटक ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. हरिप्रसाद के इस बयान पर बासनागौड़ा पाटिल यत्नाल ने फिरकावाराना इंतशार पैदा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए सख्त मजम्मत की और उनकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। साबिक MP VS उग्रप्पा ने कहा कि हरिप्रसाद पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं और उनका ये बयान इसी सीनियरिटी की बुनियाद पर है। इसके अलावा बीजेपी का रिकॉर्ड भी ऐसा ही है कि उन्होंने अपनी पार्टी के MP के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और माजी में पुलवामा का वाक़या भी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल किया है। कौम की सलामती पर सियासी फ़ायदे को तरजीह देना ही बीजेपी का तरीक़ा है। BK Hariprasad is a senior leader of our party and he has been working in the national level in the last more than 3 decades, and he has got information about the entire country. I have no idea on how, where he got the information. Being a senior leader, with his knowledge, he might have made such a statement. But one thing is very clear. See, after attack on Parliament, why central government has not taken any action against the person who was responsible for issuance of passes? Why no action has been taken for the failure of secretariat? Why no action has been taken against the intelligence department of central government? Why no one has owned the responsibility, moral responsibility for the incident? So all these things very clear. So for the sake of politics, Bharatiya Janata Party people, they are ready to do anything and everything. Not only that, in fact, Pulwama issue, former Lieutenant Governor of Kashmir made it very clear it was not at all an issue. It was due to the failure of central government that incident was taken, and that incident was made use by the Bharatiya Janata Party in 2019 Parliament election. These two these two incidences are very clear that Bharatiya Janata Party, so they are ready to do anything and everything for the sake of their political support or political gains.